absolutely important part. So last class रे हमें section 6 रो theory part टा complete करथिलु. Okay. तो आज रो agenda हैला हमें illustrations उड़ा भलरे देखिबा. ठीक अछि. अच्छा illustrations आपण जो भी statute पढुचंती illustrations उड़ा double triple times पढिबे. Okay, कौन पाई? Now if you see in most cases illustrations आपणकर directly exam रे आसे. Okay, जोड़ा हम कहूँ analytical questions, problem based questions एगुड़ा मेंस रे कहूँ जोटे लिखिया पे पड़िबो ना descriptive सेठी एगुड़ा directly illustrations रु पकांदु. Okay, either direct गोटे single illustration रु पचार देबे, otherwise they will combine 2 or 3 illustrations आउ से हिसाब रे आपण को पचारिबे. बुझी परले. तो illustrations बुझीबाटा बहुत दरकार. इनफैक्ट नोट्स भी illustration रे आपण लिखिबे सेटा कि ए आया हेले फाइनली एया हबो. मु देखुची केत जण जो माने आंसर लिखुचंदी गोटे बड़ लेखुना कोन रहउची अरे जो इलस्ट्रेट गोटे मु तार अलगा क्लास पूर्ण गोटे आ भीतर ही करबी सकाळ क्लास रे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो थाए ठीक है प्रॉब्लम गोटे पडुची तो तार फाइनल जोटा में फिराक रे एफआईआर रे सी रे कोचु कंक्लूजन रिलेटेड टू द करंट सिनेरियो सेठी यू डोंट हैव टू लाइक माने द कोर्ट मे डू दिस द कोर्ट मे डू दैट ऑब्वियसली कोर्ट रो तो डिस्क्रिप्शन अछि से जा भी कर परियो बट नॉर्मली रूल्स हिसाब रे कोर्ट को कोन करिबा कथा सेटा लिखियार अछि तेनु तार जो टर्म हमें यूज करू लिखिया पई द कोर्ट इज मोर लाइकली टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड बिकॉज ऑफ ए रीजंस जोटा आपण ऑलरेडी फिराक रे लिखि सारथिबे बुझि परले तो मोर लाइकली टू the court may do this that सेटा अपन लिखले पुणी लिखछन but it depends on the discretion of the court चाहे छाड़ी भी देबे तो सेटा obviously we know that decide the case duty पचाउजी सेठी you have to give a definitive answer. Okay, अपन यदि what about री करिवे ताले तो मार्क आसीबनी मोर बुझि परले तो सेटा that one or two classes I'll take जोटी के एटा हला क्वेश्चन तो आम आंसर एया रहबार अछि. हम टिके सॉरी जो 15 20 टा सेक्शंस जोटी के हमें आंसर करिते तो आज हमें से करबा 6 रो सब फर्स्ट इलस्ट्रेशंस देखिबा देन 5 और 6 रो ओके 10 क्वेश्चंस वी विल डू एमसीक्यू एंड आई विल आस्क यू टू राइट समथिंग. ठीक अछि. सो प्लीज ओपन योर बैरक टा ओपन करंतु एंड कम टू द इलस्ट्रेशंस. ओके, इलस्ट्रेशन बीएसए सेक्शन 6 रो इलस्ट्रेशंस. दीदीटा हमें देखिबे. ओके, एक्सप्लेनेशन दीटा बुझी परले तो जो एक्सप्लेनेशन 1 ये पढ़न तो सेटा लास्ट क्लास में हमने कवर करथिलु जो एक्सप्लेनेशन 1 आउ एक्सप्लेनेशन 2 अछि सेक्शन 6 रो सेटा आपण बुझी चंदी तो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दैट और नॉट. जोटा हमें लास्ट रे जो एग्जांपल्स की आपणकर केस लॉज को नहीं कि हमें डिस्कस करथुलु से पॉइंट्स उडा कंडक्ट एज ए फैक्ट कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट. ठीक अछि. जोटा हमें नवजोत संधु केसटा देखथिलु. ठीक अछि. तापरे बसावराजा प्रभाकर बसावराजा केसटा देखथिलु. ओके, लास्ट क्लास रे बुझि परले. सो नाउ लेट अस कम टू दिस दीदीटा हमें नहीं कि देखिबा सो दैट इजीली हमें ताको वी कैन डिस्कस. ओके, तो एथर को जो वीकली टेस्ट रहइबो तो सेथरे बी सेटा भी पडिबो तो एथरे ए इलस्ट्रेशन को ही नहीं कि क्वेश्चन रहइबो मेंस रे. ओके, प्री रे भी राइट. आज मु देई देबी सेटा तार डिटेल सिलेबस टा सो दैट यू नो ए मंडे ट्यूसडे रे जो टेस्ट हबो वीकली टेस्ट. ओके, सो फर्स्ट कम टू द फर्स्ट टू इलस्ट्रेशन सेक्शन 6 रो. ओके, फर्स्ट इलस्ट्रेशन तो आसंतो A is tried for the murder of B. Okay, the fact that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B had tried to extort money from A, okay, by threatening to make his knowledge public are relevant.
ठीक अच्छे कहीं एथरे सब जिनस ऑलमोस्ट आसी जाऊँ आपणकर जहाँ सेक्शन 6 आपणकर कहूँ आपको ओके दैट इज मोटिव प्रिपरेशन प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट केमिति ना प्रथम देखो बी रो मर्डर हो जाइए ए को अक्यूज करा ए ट्राइड होची ओके सो फैक्ट्स कौन ए हैड मर्डर्ड सी ए आगुरु सी की मार देथिला आ बी ए कथाटा जानिथिला कि ए सी की मारी ओके आउ ए कथा जो से जानिथिला से ताटू पैसा एक्सटोर्ट कर दिया पे चेष्टा करथिला ओके कि जदि मते पैसा नबो मु एटा पब्लिक नॉलेज को आन देबी रिवील कर देबी सो ऑल दीज थिंग्स विल बी रेलेवेंट ओके कि जहाँ जहाँ सब आपण फैक्ट्स देखिए ऑल दिस फैक्ट्स विल बी रेलेवेंट ओके फर्स्ट इलस्ट्रेशन टा क्लियर राइट A sues B upon a bond for payment of money. B denies making the bond. The fact that at the time when the bond was alleged to be made, B required money for particular purpose is relevant. Do you know the concept of bond? जोटा आमे देखिथिलु कोतरे कॉन्ट्रैक्ट रे बॉन्ड माने कोन बहुत ए वर्ड ता आपण माने नॉर्मली बॉन्ड व्हाट यू मीन बाय बॉन्ड आपण बेल बॉन्ड सुनुचंती ओके क्रिमिनल लॉ रे तापरे हजार प्रकार बॉन्ड्स आपण आपण बॉन्ड्स केते जण किनुथिबे भी जो माने टिके यू नो वर्किंग प्रोफेशनल अछंती फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अछि कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स किनुचंती कि प्राइवेट बॉन्ड्स किनु बॉन्ड माने कोन सीधा साधा भाषा रे कहले व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड इकोनॉमिक सेंस छाड़ी दियंतु बॉन्ड माने कोन आपण केमिकल बॉन्डिंग पढिथिबे ओके आपण कहू ना मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई भितर बॉन्ड टा बहुत भलो अछि ओके कोहेसिवनेस केमिस्ट्री डिपेंडेंस इन दैट सेंस आपण कहू किंतु एटी लॉ रे तो हम बॉन्ड कथा कहू स्पेशली फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एनी काइंड ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड सीधा साधा कह गले इज ए टाइप ऑफ लोन एतिकी मन रखियो बॉन्ड गोटे लोन टाइप रो टेक्निकली फाइनेंशियल डेफिनेशन देखिले ऑफ कोर्स बॉन्ड और लोन भितर डिफरेंस अछि बट बॉन्ड माने कोन बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ यू नो लेट्स से मते गवर्नमेंट गोटे बॉन्ड बिकिला 1000 टंका मु किनी देली बॉन्ड टा गवर्नमेंट बॉन्ड गोटे मु किनछि ता अर्थ हला आई हैव गिवन ए लोन टू द गवर्नमेंट ठीक अछि मु 1000 टंका देछि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट मते गोटे बॉन्ड देछि तो बॉन्ड रे लिखा हिछि कि वर्ष पर से मते 1100 टंका फेरेबे हला माने इतकी परसेंट इंटरेस्ट तो कोन होबो ना आफ्टर 1 year I will return the bond certificate okay and government will pay me 1100 मोटू नेथिला 1000 टंका तो 100 टंका इंटरेस्ट देला बेल बॉन्ड सेमती मु बेल रे जाउची जदि मु खसी जीवी पळेबी आसीबिनी तो गोटे सिक्यूरिटी पाई मोटू गोटे बॉन्ड नै आउची जेतले मु पळे आसीबी तापर से पैसाटा मते पुनी फेरे देबे एठी लोन तो नुह बट इट इज अ काइंड ऑफ ए ओके गोटे सिक्यूरिटी पर काइंड ऑफ ए श्योरिटी बट अगेन श्योरिटी और बॉन्ड भीतर भी डिफरेंस अछि ओके बट एनी बॉन्ड रो कांसेप्ट है से सो ए स्यूज अपॉन ए बॉन्ड गोटे बॉन्ड पाई ए बी ऊपर केस करछि ता माने कोन कि यू नो बी को पैसा दबार थिला ए को ओके फॉर द पेमेंट ऑफ मनी तो दे हैड ए बॉन्ड ओके ए ओ बी भीतर बॉन्ड थिला कि ए बी को पैसा देछि आउ बी ओके बॉन्ड ता ताको देथिला तो से हिसाब रे से फेरेबो तबरे वर्ष पर कि 6 मास पर जाबी बी डिनाइज मेकिंग ऑफ द बॉन्ड बी कहछि भाई मु सेमती किछि बॉन्ड ही करनी ना मु पैसा नै कि मु से बॉन्ड ही करनी किछि okay the fact that at the time when the bond was alleged to be made B required money for particular purpose is relevant B रो गोटे ट्रीटमेंट पाई सेतले लाख टका दरकार थिला जे मना करछि ना मु लाख टका नेनी आटू जहा भी पैसा मु नेनी बट सेटा ता मेडिकल बिल सु जणा पड़छि तार गोटे कि जोटे यू नो ऑपरेशन हला जा हला सेही टाइम रे से लाख टका तार दरकार थिला आ ताको मिलिथिला भी को पटु गोटे आ से ताको देछि हॉस्पिटल सो दिस विल आल्सो बी रेलेवेंट बुझिपारे इलस्ट्रेशन ए और बी थरे थरे निजे पढ़ंतु जदि किछि डाउट अछि सेतरे बुझि पारनांदी कोतरे देन आस्क मी एल्स वी विल गो टू द नेक्स्ट टू
ताले नेक्स्ट दीटा देखंतु A is tried for the murder of B by poison. Okay, A B की poison दे देची से allegation होची से पे ता ऊपर केस चलची. The fact that before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B is relevant. Let's say गोटे गोटे slow poison किछि होची thallium गरिका. Okay, heavy metals गरिका. Thallium poisoning जोगु तार डेथ हिची. Okay, आउ ये बी जस्ट अ डेथ आगुरु लेट्स से 5-10 दिन आगुरु गोटे केमिकल शॉप रु थैलियम किनथिला. ओके, ताले सेटा भी रेलेवेंट हबो. ठीक अछि. सो इट विल बी रेलेवेंट दैट सेम टाइप ऑफ पॉइजन वाज बॉट बाय ए. राइट. फोर्थ टा देखंतु. द क्वेश्चन इज वेदर ए सर्टेन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए. ठीक अछि. ए गोटे विल बनेछि डिस्प्यूट अछि कि से डॉक्यूमेंट जोटा अछि हम पाखरे सेटा एक्चुअल ए रो ओरिजिनल विल टा कि नो. The facts that not long before the date of alleged will, A made inquiry into matters to which provisions of the alleged will relate. Suppose से जने advocate को okay approach करछंती मते will बनैबार अछि एई जिंस मो will रे रखिया पे चाहंती ए सब जिंस तांको संगे डिस्कस करिछंती. That he consulted advocates in reference to making the will and that he caused drafts of other wills to be prepared of which he did not approve are relevant. Okay, so gote gote kori bhangi dekhiya. तो गोटे हला he made inquiries into matter of which provisions of the alleged will relate. Okay, मोर गोटे बड़ प्रॉपर्टी अछि आउ से प्रॉपर्टी 30% मो फादर मते देथिले माने से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आउ 70% त पाखा पाखी जमी गुडा खाली थिला सेगुडा मु किनिछि. That is not ancestral property. It is self acquired property. ठीक अछि. एबे मो लेट्स से मोर पुओ दि जण अछंती से आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मु पुओ मानु किछ दवा पे जाउनी. मु ताकू गोटे को ट्रस्ट की कोडू देबी जोडी कि सेटा काम आसी करियो सोसाइटी रो. ठीक अछि. बहुत लोक एमती करन ते जेते पाप पाप करथंतु भूलभाल बाटरे पैसा आ जमी अर्जित करथंतु बट लास्ट जतले जेमती आप कहउछन डाइंग डिक्लेरेशन से सेही टाइप रो जतले जणा पड़े कि आउ समय कम अछि तो सेटा तने गोटे भलो जगह में दे दियंती. बहुत एग्जांपल सपोर्ट नहीं परिबे. कंप्लीटली माने मु गोटे बहुत अलगा डायमेंशन रे लाइफ रे सब भूलभाल जिंस करिछि बट लास्ट मोमेंट रे मु सेटा को गोटे कंप्लीटली ऑपोजिट मोर जोटा आइडियोलॉजी थिला मु जे भाबुथिली तार कंप्लीटली ऑपोजिट साइड रे जो माने थिले तांकर सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करी कि तांकू दे दउछि. तार बेस्ट एग्जांपल हैला आपण माने आई डोंट नो इफ यू नो दैट पर्सन और नॉट. गोटे टाइम रे इन अर्ली 2000 1990s ही वाज द जेतेबेले आपणकर यूपीए रूल थिला कांग्रेस रूल थिला सेंटर रे. ओके, 2004 रु 2014 बहुत पावरफुल लोक से ताका ना हला अमर सिंह. ओके, अमर सिंह उत्तर प्रदेश रे थिले वेरी क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर देन मुलायम सिंह यादव एंड इवन लेटर. ओके, तो अमर सिंह समाजवादी जहाँ सब करते से सब करते बट देह खराब हो गला. ओके, टर्मिनाल इलनेस हो गला. तो तार 6 मास आगुरु जीवार 6 मास वर्ष आगुरु से ताकर जेते सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अछि ता भितर बहुत पार्ट से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देदेले आरएसएस जार से पूरा ताको पॉलिटिकल करियर रे पूरा अपोनेंट थिले. ठीक अछि. देदेले ताको लास्ट में पचर हला व्हेन ही वाज लाइक बहुत कंडीशन खराब थिले से कहले कि जा जा सब हेछि बट मोर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी गुडा मु आंकु दोछि केना मु जानछि ये सोसाइटी पे काम रे लागिवो. ये मोर पॉलिटिकल राइवल हे परिथांती कि आइडियोलॉजिकल राइवल हे परिथांती. ओके, बट नाउ द थिंग इज दैट जेतेबेले मु जानुछि कि मो पास समय कम अछि मते जोटा ठीक लागु सेटा करछु. राइट. तो विल रे सेमती तो ए केस रे कोन हिछि ना विल रे से इंक्वायरी करछन मते या दबार अछि 70% मोर मु एटा आकु दे दवा पे चाहूछि. ओके, तो केमती होबो 30% रो डिवीजन टा केमती होबो ए सब जिंस से माने से ए पचारचंती डिफरेंट से तो डाटा कलेक्ट करछंती एडवोकेट्स को पचारचंती आउ डिफरेंट ताकर विल रो डिफरेंट ड्राफ्ट्स करछंती. से ड्राफ्ट पढ़ला पर तो रिजेक्ट कर देछन ना ना एथरे आउ केतेटा जिंस मिसिबो एटा हबन.
तापर फुनी ड्राफ्ट देखाइस तांको एडवोकेट द्वारा से ना एटा भी होबन एतरे आउ दी तीनटा जिंस मिसी ओके एंड दैट ही caused drafts of other wills to be prepared okay which he did not approve are relevant आउरी केतेटा विल्स में भी से कहथिले बट सेतरे से राजी हेले ने which he did not approve से सब जिंस रेलेवेंट हबो कि गोटे डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जोटा क्लेम होची कि एटा हला एंकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट okay so all these facts will be relevant ठीक अछि आपन काम हला जस्ट थिंक एटा को थरे रेलेवेंस ताको मिलुछ ओके जो चारटी जिंस हमर पचारची राइट सेतरे को थरे सेतर रेलेवेंस मिलुछ मोटिव रे प्रिपरेशन रे प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट रे ओके को थरे एटा हबो तो सेटा भी जदी क्लियर हे जाउछ देन ता माने आपन प्रॉपर्ली बुझि जाइछ ओके तो सब एई केस रे कोन एटा हला सी बिफोर द एक्चुअल इंसिडेंट माने ताको डेथ था गुरु ओके तो प्रीवियस कंडक्ट आगुरु से ताको डेथ था गुरु विल रिलेटेड से कोन कोन सब करछन ओके सो सेथरे जिवो एटा केमती अपन देखियार अछि जत्ते तो से देइची इलस्ट्रेशन सेटा कहा अंडर रे जिवो ओके सो इलस्ट्रेशन नंबर 3 and 4 और C and D बुझी परले एटा ना किछि डाउट अछि सर डी पार्ट रे जो अपन कहिले सेतरे माने गोटे केस लो धरन दोउची कि इलस्ट्रेशन दोउची सब जाक इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहबा दरकार कि गोटे दिटा रहिले भी चलिबो माने सेम आंसर लिखिबार अछि नहीं माने आपण कहउछन डिसाइड करिया पे गोटे केस को प्रॉब्लम क्वेश्चन एबे धरन प्रॉब्लम पडिला एथरे जो सेक्शन 6 रे हमर देइची कि मोटिव प्रिपरेशन प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट बट इलस्ट्रेशन रे धरन तो खाली मोटिव प्रिपरेशन देइनी और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्टर खाली गोटे ये एटा जो हमें कहउछु ना एनी वन ऑफ दिस मोटिव हो प्रिपरेशन स्टेज हो किंबा कंडक्ट हो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट ओके ये एनी फैक्ट which is related to these will be relevant बुझी पाले तो चारिटा जाक एका संगे होबा कथा न सेटा कोनी से मोर खाली मोटिव टा अछि मु काहे कि ताको मारिया पे चाहूची ओके सरला तो दैट इज रेलेवेंट ओके मोटिव जाना पड़नी किंतु मु प्रिपरेशन करके रख जानी कि से आसीबो ओके ए टाइम रे आसीबो ताले यू नो मु मोर रेडी हे कि अछि जोडा प्रीवियस सेक्शन रे अपॉर्चुनिटी हमें देखिलु सेटा ओके तो प्रिपेयर करके मु रख से आसीबो एठी कि तो मु मोर जा भी जो थर ताको मारिया पे ट्राई करबी से वेपन रखी छु मो पाखरे से ए स्पॉट को पहुंचले मु अटैक कर देता तो प्रिपरेशन है कि और मोर अछि प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट आगुरु जाई कि से जो मर्डर वेपन टा किनिली सेठी ताकू दुकानी की पचारली कि मते गोटे जिंस एटा तो कहबिनी कि मार देबी एटा एमती जिंस दियो जोटा कि ना गोटे 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 एनिमल को मते ये करे बड़ एनिमल टा तो ताकू जंती थरे बाजिले एनिमल टा से जंती मर जो ठीक अछि एटा हला कोन प्रीवियस कंडक्ट कहिछि मु जाई कि दुकानी से हिसाब रे मते देला तापरे धरंतु मारी सरला परे ठीक अछि मु गोटे जहाँ को मारिली ता घर को फोन कर भाई संगे कथा हबार अच्छी है जस्ट आफ्टर किलिंग राइट तो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट केबे फोन करे बट से दिन मुझे फोन कर बुझिपारे तो ये चारिटा जाक एंड रे प्रेजेंट होबा कथा नो माने ऑल दीज फोर नीड नॉट बी प्रेजेंट एनी वन हेले भी सेटा रेलेवेंट हो बुझिपारे किंतु हाँ जदि आगु देखियो जदि अच्छी गोटे एमिति प्रोविजन थिबो जोतरे कि सब इंग्रेडिएंट गुडा ओके दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस हबो ताले ऑब्वियसली हमको सेटा प्रूफ करिया पे पड़िबो जदि प्रॉब्लम क्वेश्चन पड़ला कि एही चारिटा रिक्वायरमेंट अछि आ एही चारिटा जाको प्रूफ हो सेटा केतेबेले हमें करू फिराक रे एफ आई मोसे तो तार गोटे विल डू सम क्वेश्चन टिके सरी जाऊ 6 सरला अगर 10 और 12 पर्यंत सर जाऊ ताले आपण कोन ना से प्रॉब्लम क्वेश्चन करबा टिके हमर आईडिया आस जिवो तो गोटे क्लास में पूरा करबी कि सेटा केमिति करबार अछि ओके तो से जो आर रे रूल्स एंड रेगुलेशंस रे सेठी लॉ जतले आपण कोट करे सेक्शन एतिकी अंडर रे एई जिंस हेले जाकी सेक्शन एतिकी आपनकर लागू होबो सेटा लिखिबार अछि सेथरे बुझि पाले अंडरस्टूड डाउट थिला जंकर आगे सर ओके ऑल ऑफ यू आर क्लियर
नाउ नेक्स्ट दीटा ई और एफ को आसंतु 5 and 6. A is accused of a crime. The facts that either before or at the time or after the alleged crime, A provided evidence that would tend to give to facts of the case an appearance favorable to himself, or that he destroyed or concealed evidence, or prevented the presence or procured the absence of persons who might have been witnesses, or suborned persons to give false evidence respecting it, okay, are relevant. तो गोटे गोटे पार्ट रे डिवाइड करिकी बुझंतु. तो ए लेट्स से मर्डर, ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर. तो मर्डर हबा आगुरु हेला बेले कि हेला परे, ओके, जदि से एमती किछि एविडेंस छाडिछि, ओके, सो किंबा ताकू डिस्ट्रॉय करिया पे चेष्टा करछि जेमति कि ता फेवर रे जिंसटा जीवो, ओके, एविडेंस कंसील करिया पे चेष्टा करछि कि सी सेही टाइम रे सेही जगह रे थिला, सेही ताकू बाडे लागि जा भी कला, राइट, ताकू डिस्ट्रॉय करिया पे चेष्टा करछि किंबा सेही टाइम रे, ओके, सेठी आउ जदि कि आई विटनेस थाई पारंती, से नॉर्मली आसंती सेही टाइम रे, ये किछि गोटे रास्ता रास्ता बंद कर देछि, कोन गोटे कर देछि जे से माने आसी पारना, ओके, ईदर हैज प्रिवेंटेड द प्रेजेंस, ओके, जो माने नॉर्मली आई विटनेस ही तांते, जो माने विटनेस ही तांते ताको प्रेजेंस को प्रिवेंट कर देला, और प्रोक्योर्ड द एब्सेंस, ओके, डिफरेंस कोन दीटर एक तो ही कथा ना, प्रिवेंटेड द प्रेजेंस से माने सेठी थांते नॉर्मली, ये केमतु केमती कोन अटके देला, ही प्रिवेंटेड द प्रेजेंस और प्रोक्योर्ड द एब्सेंस. ठीक अछि, प्रोक्योर्ड केमती त डिफरेंस टा बुझी पड़छन. प्रोक्योर्ड माने किछि प्रलोभन देई कि कोन केमती करी कि से लोक आसिया कथा से तर सेटिंग कर देला जे लोक आसे, माने सेथरे गोटे कनाइवेंस भी अछि जो लोक आसे. प्रोक्योर्ड, प्रोक्योरमेंट माने कोन, आपण गोटे जिंस प्रोक्योर करछन, ओके, बिजनेसमैन तार रॉ मटेरियल प्रोक्योर करछि, केमिति प्रोक्योर करछि, पेमेंट करी कि. तो प्रोक्योरमेंट रे यू हैव टू गोटे किछि गोटे आपण को कंसीडरेशन हो, पैसा हो आ कोन हो तो दबा पे पड़ियो. दीटार फाइनल रिजल्ट सेम हैला कि जे विटनेस हेई पारि थांता सी क्राइम सीन को आसिलानी, बट केमिति से ताको प्रिवेंट कला से दीटारे डिफरेंस अछि. तेनु जो प्रथम जिंस कहूची प्रिवेंटेड द प्रेजेंस, सो ही डिड समथिंग, ओके, व्हिच प्रिवेंट, जो रास्ता रे से माने आसिया कथा ब्लॉक कर दे, से रास्ता से दी तीन जन को रखी दी, से माने कहले कि आज्ञा सेटा बंद अछि, मिछ पुलिस ड्रेस पिंदी थिले, कहले से बडे बंद अछि जानतु, प्रिवेंट कला तो से माने किछि जान नांती, से माने तो आसिया पे चाहूथिले, और ही प्रोक्योर्ड द एब्सेंस. तो से तीन जन जतले आसुथिले, ओके, तो तांको सेठी अलगा किछि करिकि सर राजी एपडे गोटे यू नो समथिंग व्हाटएवर गोटे ब्रेकफास्ट गोटे होची, चलंतु सेपडू जिबा, सेठी सेपडू जाई किछ लाभ नै हैला. प्रोक्योर्ड द एब्सेंस, तो ता ब्रेकफास्ट खर्च खर्च देई दियो, प्रोक्योर द एब्सेंस, बुझले. तो फाइनल रिजल्ट इज सेम इन बोथ द केस, बट लीगल अंडरस्टैंडिंग, लीगल रैशनल, लीगल मीनिंग ता आपन बुझियार अछि. बुझी पारले, एवरीवन इज क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटेड द प्रेजेंस और प्रोक्योर द एब्सेंस. बुझिले एटा, ओके. छोट छोट जिंस गुडा ही हमर जेतले प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस करिवो सेठी हमको दरकार पड़े, ओके. सो हु माइट हैव बीन विटनेसेस और suborned persons to give false evidence respecting it, ओके. तो से जो सब जहाँ भूल भाल, ओके, अपीयरेंस सब कला ताकू देखै कि ताकू इंप्रेस करी कि, ओके, जो माने एविडेंस दौथिले कि देई पारि थांते ठीक रे, तांको ऊपर इंप्रेशन देई कि देखो एमती हला सेमती हला, से माने भी एग्री करी गले, फॉल्स एविडेंस से माने भी देले, इन द सेंस कि से माने एग्री करी कि देछन, ओके, तांको लागु जे हां एई छि, तो से माने पुलिस सामने से कहले, ओके. रेस्पेक्टिंग इट कोन, रेस्पेक्टिंग व्हाट, रेस्पेक्टिंग, ओके, से जो तारा फेवरेबल, ओके, सर्कमस्टेंस करिया पे चेष्टा कर, फेवरेबल अपीयरेंस टू हिमसेल्फ, ओके, जो फैक्ट्स गुडा से दोछ ताकू रेस्पेक्ट करी कि माने फॉल्स एविडेंस देछन.
आको इंटेंशन नथला फॉल्स एविडेंस दवा पे ओके ऑल दीज थिंग्स विल बी रेलेवेंट ये सब गुड़ा रेलेवेंट हम ओके तो आउ थे पढ़ंतु मेनली ये जिनसुड़ा जो से जो prevented the presence or procured the absence तार मीनिंग टा बुझंतु एंड रीड इट वंस मोर थरे पढ़ंतु जदी कोडा डाउट हैला जो भी पार्ट एक्चुअली कोन होय कि यू सी अपन अपन केबे इंग्लिश की अमेरिकन लॉ तांकर स्टैट्यूट्स देखिछन अपन देखियो यूरोपियन लॉज करी कभी तांकर यूरोपियन यूनियन रे जो तांकर देखिबे बहुत देशर तांकर लॉ इज वेरी सिंपल इन द सेंस सिंपल इंग्लिश लिखा है आमर किंतु इंग्लिश टा टिके ना लीगल लैंग्वेज टा कोन ना गोटे जोटा सीधा 5 वर्ड रे लिखाई पारिबो ताकू 50 वर्ड रे बुले बुले लिखाई तो अधा पिला से बेयर राइट रु बुझी पारंतनी कि जिंस कोन ताकू बेस्ट वे हैला डिवाइड इट इनटू सेगमेंट्स एंड अंडरस्टैंड इन योर ओन वर्ड्स ठीक अछि निजो देखो आमे भाबू केमती हाउ डू वी थिंक ओके यू नो नोम चॉम्स्की ओके चॉम्स्की कर जो थ्योरी कि जने भाबुची केमती से लिंग्विस्ट थिले लैंग्वेज थ्योरिस्ट थिले आउरी भी बहुत तांकर जिंस अछि इकोनॉमी ऊपर भी पूरी कहिसनि बट एनीवे नोबेल प्राइज विनर तो आउ भी बहुत गुरे हमर लैंग्वेज मॉडल्स अछि जोथरे जणा पड़छि कि कॉग्निटिव साइंस रे पिला सब बेले ताका मदर टंग रे जिंसटा भाबे जदि से अलगा को लैंग्वेज रे कहबो ताकू से हिसाब रे ट्रांसलेट करी कहबो देखो मो मदर टंग ओडिया तो मु प्रथमे गोटे जिंसटा ओडिया रे भाबुछि ताकू तापर इंग्लिश की मु जदि फ्रेंच रशियन जर्मन जानछि सेठी ट्रांसलेट करी माइंड मोर कहूछि बुझि पारे तो तेणु आपण पढ़िया ପାଇଁ भी सेही मेथड टा यूज करिए फर्स्ट यू अंडरस्टैंड इन योर ओन लैंग्वेज तापर इजीली ताकू आपण जेंति सिंपल लैंग्वेज रे लिखि पारे ओके बहुत पिलांकर असुविधा कोन हुए कि हमें आंसर जेते लिखू डिस्क्रिप्टिव आंसर सुडा आमे जार्गन्स की बैर को घोषी के लिखिया भी चेष्टा करू किछि लीगल जार्गन्स दरकार नहीं सिंपल भाषा रे जेते लिखिए मार्क सेति के आसे पॉइंट वाइज लिखिबे ओके एंड सिंपल लैंग्वेज लिखिबे right so any doubt in illustration 5 or E else we'll go to illustration 6 or F fine ताले sixth illustration को चलो तो F the question is whether A robbed B the facts that after B was robbed C said in A's presence okay after subsequent conduct ठीक है after B was robbed C said in A's presence okay the police are coming to look for the person who robbed B and that immediately afterwards এটা শুনি কি A ran away are relevant ঠিক আছে তেଣु चोरी हैला ओके B ठू चोरी हैला तो सेठी आउ जने थिले C सी कहले सेठी A भी थिला कहले कि पुलिस आछंदी आउ से जे भी चोरी करछि से साइंस धरा पड़ियो जेते रूम रे अछंदी सब बंद हेकी अछन तो सेतिकी बेले ए दौड़ी की पळेला ठीक अछि so subsequent conduct immediately after the incident transaction okay दौड़ी की पळेला तेणु subsequent conduct रू जाना पड़ला बुझि पाले so that will be relevant that immediately afterwards A ran away are relevant okay এটা डायरेक्ट আছে এটা কিছু বেশি বুঝিবারও নাই okay so these are the first 6 তারপরে নেক্সট দুইটা নেব the question is whether okay number 7 or G the question is whether A owes B 10,000 rupees okay so the question is whether this and that we question कौन this is fact in issue the question is whether A robbed B that is the fact in issue okay से चोरी कर CA चोरी की नहीं the question is whether A owes B 10,000 rupees तो तारी ऊपर केस स्टार हो the facts that A asks C to lend him money okay A asks C to lend him money तो A first C की पचारला मतलब पैसा दियंतु and that B said to C in A's presence and hearing okay त माने कोन
डी सी की कहला ए रो प्रेजेंस रे आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए ओके तो ए सी की पचर मत पैसा दियो मत जदि अछि मत दरकार अछि सेठी डी भी थिला डी सी की कहूची मोटे दियोनी काहे ना ये बी रो 10,000 टका नेकी रखची ए पर्यंत फेरोनी आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए फॉर ही ओज बी 10,000 rupees and that A went away without making any answer are relevant factors. ये चिड़ी गला okay so पळेला सेटू right so all these will be relevant facts okay ता माने A पचारला C को सेटा भी relevant fact हबो D C की कहला A रो presence रे और hearing में presence and hearing में से सुनुची ए सुनुची कथाटा ओके डी कहूची सी को कि नहीं मोटे दियोनी से ऑलरेडी बी टू पैसा नहीं 10,000 टका फेरोनी तक ओके तो तबरे से किछि न कहि कि जदि से फेरै थांदा कोन से कंटेस्ट करता ना ना तुम भूल कहू डी को कहिता मु ऑलरेडी फेरै से कि मु नेइनी से किछि कहलन चुपचाप पळेला हैला सो द मैटर द fact in issue is not whether you know A asked D something or A asked C something कथाटा A B टू पैसा नहीं कि नहीं ओके तेणु ये जहाँ जहाँ सब है एगुड़ा सब आपणकर ओके रिलेटेड रहिबो ठीक अछि सो these all will be relevant facts okay to prove whether A owes B 10,000 rupees okay कहना A he went away without making any answer जदि सेटा भूल होता नॉर्मली गोटे प्रूडेंट लोक से कौन करता कंटेस्ट करता ना एटा मिछ कथा मु आइदर मु ताटू पैसा नहीं कि जदि भी नहीं ताको फेरे देछि okay so this is your number 7 any doubts in this थरे पढंतु निजे जदि किछि डाउट अछि ताले पचरन नहीं तापर नेक्स्ट को चलंतु H okay number 8 the question is whether A committed a crime the fact that A absconded after receiving a letter warning A that inquiry has been made for the criminal okay was being made for the criminal and contents of the letter are relevant ठीक है you know there was a you know आपण जो क्राइम घरिका एबे मॉडर्न ये रे जेमती क्राइम सब सॉल्व होची जेतले फ्री टाइम अछि इफ यू आर रीडिंग तो वाला कथा तो सेमती डिटेक्टिव ए लॉ रिलेटेड जेमती सीआईडी हमर इंडिया रे जेमती चलतले राइट द एक्चुअल केसेस रे आपण देखि परिबे यूट्यूब रे भी अछि किबा आपण जदी नेशनल जियोग्राफिक एंड सेटे सब देखिबे गोटे सीरीज अछि मेडिकल डिटेक्टिव्स ओके तारो रिसेंट नाटा हैला फोरेंसिक फाइल्स तो सेथरे केमिति कोन क्राइम बस्टिंग करा हुए सेटा सब सेथरे यू विल गेट अ लॉट ऑफ दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस ठीक अछि तो गोटे केस थिला जोटी की गोटे सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर हेतिला गोटे स्टूडेंट ठीक अछि अमेरिकन यूनिवर्सिटी रे तो औ ताकर से यूनिवर्सिटी टाउन माने ताकर सब गोटे गोटे यूनिवर्सिटी गुडा गोटे गोटे कॉम्प्लेक्स माने पूरा एवरी हमर ए जंती अछि बट ताकर एटा बड़ स्टेज बड़ लेवल रे ओके एवरीथिंग इज देयर पुलिस स्टेशन रु आरंभ करी की हॉस्पिटल रु आरंभ करी की सब थे ओके हमर बेटी बड़ बड़ यूनिवर्सिटीज रे अछि बट नॉट इन ऑल यूनिवर्सिटी एनीवे से जब यू से जियोटार सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर हे गला आउ दोज वर द अर्लियर डेज ऑफ डीएनए एनालिसिस तनु से माने कोन कले वॉलंटरीली पचारले जबरदस्ती तो विदाउट कोर्ट ऑर्डर कहि होबनी काकू ना डीएनए सैंपल दियो ठीक अछि तो से रिक्वेस्ट करा हला कि तुम डीएनए सैंपल जते सब मेल अछंती समस्त डीएनए सैंपल देबे ऑल द स्टूडेंट्स गेव जणे आसिला ओके ऑब्वियसली तारी ऊपर ए गला एटा एंड फाइनली जना पड़ला सेटा सेही कर ओके सेम टाइप रो सिचुएशन गोटे क्राइम कमिट हेची फैक्ट इन इश्यू हला ए करिछि कि नहीं ओके तो एक गोटे चिठी आसिला कि गोटे इंक्वायरी होची बाहर करिया पे कि किए से क्राइम टा करिछि तो सेथरे हमें आपन ब्लड टेस्ट नबो एया करिवो सेया करिवो एई दिन आपन पहुंचो कि हमें आपन घरे एई दिन पहुंचो हैला पढ़ी कि सी तार पढ़ेला से एब्सकॉन्ड करी गला तो
सी एब्सकॉन्ड कला प्लस से जो चिट्ठी रो कंटेंट आमे जीवु आपन घर को ए डेट रे ए टाइम रे ब्लड टेस्ट आपन घर करिवु ओके ये सब रेलेवेंट हम all that okay his action of absconding along with the content of the letter both will be relevant बुझी पाउछन okay so any doubts in this h पर्यंत no so next data jiba I and j A is accused of a crime. The facts that after commission of the alleged crime, A absconded or was in possession of property or the proceeds of property acquired by the crime, or attempted to conceal things which were or might have been used in committing it are relevant. तीनटा जिनस देला ओके कि ओटे क्राइम कमिट हेची ए एक्यूज्ड हेची कि से करची क्राइम तो आफ्टर द क्राइम ए एब्सकॉन्ड करि जाइची एटा रेलेवेंट फैक्ट हबो जोटा कि हमें प्रीवियस एग्जांपल रे भी देखिलु इलस्ट्रेशन और से जो लोक लेट्स से मर्डर केस ओके मर्डर इज जनकर से लोक जो मर्डर्ड लोकर गोल्ड ब्रेसलेट आ पाखरे मिलला पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी इधर गोल्ड ब्रेसलेट मिलला नले ये जाई बिकी देची गोल्ड ब्रेसलेट जा कैश ता भितर आसी पैसाटा रखछि त पाखरे से पैसाटा धरा पड़ल ओके तो फर्स्ट पार्ट रे कहला पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच इज ए एग्जांपल रे गोल्ड ब्रेसलेट नेलु और प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय दैट क्राइम ओके property acquired by the crime was the gold bracelet proceeds of it माने ताको बिकी की पैसा आनछि ओके तो सेगुडा भी सब रेलेवेंट हबो और attempted to conceal things which were or might have been used in committing it ताको खेची की मार देछि गोटे पत्थर रे तो पत्थर को नहीं कोडी पकई देछि ताको क्रैश कर देछि जा भी करछि तो डिस्ट्रॉय करबा चेष्टा करछि कि ताको ओके कंसील करबा चेष्टा करछि right segura se be relevant habo so all these facts will be relevant to the fact in issue to the main question whether A has committed that crime or not okay so next the question is whether A was raped the fact that shortly after the alleged rape A made a complaint relating to the crime the circumstances under which and terms in which the complaint was made are relevant. The fact that without making a complaint, A said that A had been raped is not relevant as conduct under this section. Okay, though it may be relevant as dying declaration under clause A of section 26 or corroborative evidence under section 160. Eta underline karantu. Very, very important. एटी आंसर ही दे देला आपनकर ओके बहुत क्वेश्चन जो जगह रे क्वेश्चन टा पचरा हुए जोटा हमें लास्ट रे देखिथिलु ओके रेस जेस्टा कथा हम कहिथिली सेठी भी हमें एई दुटा जिंस देखिथिलु कोन ना रेस जेस्टा रे आपन को इन मैटर्स ऑफ रेप केसेस हमें देखिथिलु कोन केतबेले सेटा रेस जेस्टा अंडर रे आसीबो सेक्शन 4 बीएसए रो किबा सेक्शन 6 आईए रो जेतबेले इमीडिएटली आफ्टर द रेप जेतबेले से जे विक्टिम अछि ताको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलला सी सेटा जाई कि पुलिस की कहिछि कि पड़ोसी अथॉरिटी की कहिछि तापर ता मेडिकल करिका सेडा हिछि बट केतबेले सेटा हो नथिला रेस जेस्टा अंडर रे जदि से जेतबेले ताको छडा हैला कि से दौड़ी की पळे आसला से ता घर को गला ता मां को कहला आउ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड हैला तापर से मां ताको धरि की पुलिस स्टेशन को आसिले सेठी सुप्रीम कोर्ट कहले कि एटा ऑब्वियसली ओके corroborative evidence under रे रहइबो ठीक अछि इन केस डेथ हे गला डाइंग डिक्लेरेशन रे भी जीवो बट ओके रेस जेस्टा अंडर रे जीवो सेटा हमें लास्ट क्लास रे डिस्कस करथिल सो सेटा अंडरलाइन कर दियौ कहिना बहुत जगह हमको एतिकी ही लिखिबार अछि ओके सो the fact that without making a complaint A said that A had been raped is not relevant as conduct under this section. A section रे सेटा okay section 6 of BSA रे okay relevant हबन इसी निजे से कहूची कि मते
okay, rape kara haichi, right, without making a formal complaint. Okay, but eta keut jaga re relevant hobo, dying declaration re hobo, how corroborative evidence, okay, section 160 under re hobo. So eta underline karantu, direct answer re hi हमको eta लिखिबार अछि, बहुत गुरे answers re. Okay, so this part you take it in your note. Okay, if no formal complaint has been made, then under this section, माने section 6 of BSA, okay, complaint ହେଇନି rape ର, ତାହେଲେ सेटा relevant हबन. But कोथरे relevant हबो, dying declaration suppose सी आसी की ता friend को कहूची condition बहुत खराब होची, देख एमती एमती हैला से मो संगे या कले, and after that she dies, it will be relevant. Dying declaration under ता friend कहबो मते या कहितला, ठीक अछि, or corroborative evidence, ठीक अछि. तो सेही जिनसटा से आसी कहूची बहुत जण को समस्त सुनचंदी, बट जेतु एथरे सेटा relevant हबनी section 6 BSA under रे अलगा, फॉर एग्जांपल DNA samples आसी गला, ओके, ता सहित एटा corroborative evidence हिसाब रे under section 160 हम एटा पढिबा, विल गो that will be accepted. तो एई पार्ट ता लेखन, this thing you have to write it in your notes, not as illustration but also as a part of the theoretical answer. हैला, एमती बहुत जगह illustration रे भी pointers थाए जो थरे आपण को यूज करिवार अछि आपनकर theory answers. बुझी परले, सिंपल केस रे, सिंपल भाषा रे कहय गले एथरे फॉर्मल कंप्लेंट करिया पे पड़िबो रेप केस रे, ताले ही एटा सेक्शन 6 BSA अंडर रे रेलेवेंट हम. द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग ए कंप्लेंट ए जदी कहू जदी मोर रेप हेजी तो सेक्शन 6 अंडर रे, ओके, कंडक्ट अंडर रे एटा रेलेवेंट हम. ओके, conduct under this section, though it may be relevant in other sections, dying declaration habo, corroborative evidence हिसाब रे हबो. ओके, तो ता माने कोन ए पर्टिकुलर सेक्शन पई रेलेवेंसी पई कंप्लेंट, फॉर्मल कंप्लेंट आपण करिवार अछि. ओके, जोटा हमें रेस जेस्टा रे भी सुप्रीम कोर्ट रो वर्डिक्ट देखिथिलु. इज इट क्लियर? ए पार्ट ता आपनकर क्लियर हैला ऑल ऑफ यू? तापरे लास्ट इलस्ट्रेशन को आसन. Come to the last illustration of this section. The question is whether A was robbed. हैला, तो एठी कुहवान कि A robbed B कि B robbed A. A was robbed. ओके, सेटा हैला ताठू जिंसो ताठू चोरी हेची कि नहीं, सेटा हैला आपन फैक्ट इन इश्यू. The fact that soon after the alleged robbery A made a complaint relating to the offense, that is also relevant हबा सेटा. ओके, से जाई कंप्लेंट कोर्ट की पुलिस रे, ठीक अछि. The circumstances under which and the terms in which the complaint was made, all of these are relevant. को circumstance रे से complaint टा कला, suppose police control room को phone करी करची, okay, ता tone टा पूरा माने व्यस्त थिला, okay, डरी जाइथिला, all these things will be there. Terms in which कौन कौन से circumstances कौन कहला केमती कौन हैला, all these things, okay, they all are relevant. The fact that A said that he has been robbed without making any complaint is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant dying declaration or corroborative evidence. हैला, ता माने जे आउ के रु हमें गोटे इंपोर्टेंट जिंस देखिलु कि सेक्शन 6 BSA रे, ओके, आपनकर formal complaint that would be necessary. Okay, so without any complaint it is not relevant as conduct under section 6 of BSA, okay, without complaint सेटा relevant हबन. तो एटा important जिंस आपन को माइंड रे रखिबार अछि. Okay, complaint, formal complaint has to be there. Okay, got it? So एगुडा हला, these are your basically your different illustrations, section 6 by. Okay, now you take 2 minutes, go through all this. Okay, थरथरेडा देखि दियंतु, then we will go to questions, okay, of 6 and 7.
sorry 5 and 6 section 5 or section 6 ର କିଛି questions ଦେଖିବା. So you first go through it. Any doubts if you have, then keep in mind and ask me. Okay, I'll take a break for 5 minutes. Then we'll go to the discussion of the questions. Okay, jaha hame padhilu last class re aji. That is section 5 and 6 only. Okay, fine. Just go through it once.
Okay, so let us discuss some questions related to section 5 and 6. प्रथमे section 5 टा देखिबा. So here is the first question. Which of the following best expresses the meaning of state of things under section 5 of Bharatiya Saksha Adhiniyam? State of things. Hala. कौन हबो? पढ़ंतु एटा. The psychological condition of the accused before the offense. The legal status of the parties involved in the dispute. State of things ର अर्थ कौन? The physical and factual circumstances existing during the relevant event, the moral character of person against whom evidence is given. What will be the answer? C, sir. Baki, others? Any other answer? Sir, B. B, B. Yes. B. Okay. कि जण B कहले कि जण C कहउचंती. Okay, so the answer is एटा देखंतु से कोन पचाउची. State of things माने कोन? Okay, basically objective circumstances. Okay, at the time of the incident. Weather condition हे गला, door खोला अछि कि नहीं हे गला, ठीक अछि. Lightning हे गला, any weather condition. Okay, कि आपण कोइ परिए अलगा circumstances, the presence of valuables. Okay, सुना चेन टा थिला घरे, एई टाइप रो जिंस. तो एथर मोरल कैरेक्टर एथर तो किछि करियार नहीं, right? So the proper answer would be, or the most correct answer would be C. The physical and factual circumstances existing during the relevant event. Ela hala C. Okay, so a question ro correct answer hochi C. Right? C would be the correct answer. Hello. Now come to the next question. Which of the following facts is not covered by relevancy principle under section 5 of Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023? Facts which cause the fact in issue, not covered. Okay, not covered. Facts which cause the fact in issue, facts which explain the occasion of a relevant fact, occasion, okay, of a relevant fact, facts which have no connection but affect the accused general reputation, facts that afforded an opportunity to the act to occur. तो जो टर्म्स गुड़ा यूज हेची हमर सेक्शन रे सेउतरु ही पढि के हमें इजीली C, कहि sir. परिबा कोनटा आंसर. So C. C. Option C. Okay, so that is correct. C will be the answer. बाकी तीनटा जो अछि सेगुड़ा those terms have been used in your okay act section 5 रे सेगुड़ा यूज हेची. किछटा प्रॉब्लम्स देखिबा. Okay, based on the illustrations of section 5. Section 5 रे जो illustration देची तारी ऊपर related हमें किछटा illustrations देखिबा किंबा किछटा illustration based questions देखिबा. So question number 3 की असंदु. Okay, in a trial where the issue is whether X murdered Y, which fact is most relevant under section 5? Most relevant. All facts may be relevant, but most relevant quota. Okay. Fact in issue है whether X murdered Y. X was convicted in a previous murder case 10 years ago. X had attended Y's funeral and expressed grief. X was seen hiding a blood-stained knife near Y's house after the murder. X had posted violent messages on social media a year ago. So Okay. C, sir. D एटा भी होगा answer. हाँ D ही पर है.
हाँ, X has posted violent messages on social media a year ago. ठीक है, so एगुड़ा कौन, these are circumstantial or emotional, okay, relation, right? तो एगुड़ा causally connected no, these are not connected as cause to the event of the murder. See a violent से যদি लिखता था violent message post करतला social media रे कि आपको मारी वो ताले matter होगा था, ठीक है। अब क्वेश्चन भी देखिए कौन आ भितरु one or more may be relevant but most relevant कोटा होगा, so C would be the clear answer. X was seen hiding a blood stained knife near Y's house after the murder. এটা सबुठु okay relevant fact এটা হবে, other facts may also be relevant, ঠিক আছে। now come to question 4, এটা भी गोटे problem based question देखंतु जे जोटा आपनकर related to the illustrations. A case where the question is whether A robbed B, which of the following facts is not relevant under section 5? Okay, section 5 ऊपर ही अच्छी, not relevant under section 5. It may be relevant under other section. Okay, he was returning from a jewelry store with a new necklace. Okay, A had seen B flaunting the necklace the day before. गोटे दिन आगुरी से necklace show off करथिला, flaunt करथिला, सेटा A देखिथिला. B had previously accused C of robbery. Okay, how A was seen near B's house just before the robbery. C, sir. Yes, C. Not relevant under section 5. C. Option C. C will be the correct answer. B had previously accused C of robbery. Okay. So section 5 which are directly related to the occurrence, okay, or that event or the transaction. Okay. So he had previously accused C of robbery. तो ये ना opportunity, ना motive, ना context एवढा किसी establish करूँ. Okay. So এটা कौन होगा? এটা remote or unrelated acquisition. So under section 5, ठीक है, এটা relevant होगा नहीं. Got it? Now come to question 5. এটা भी got a problem based question based on section 5. In a prosecution for poisoning, which of the following is inadmissible under section 5? The victim has been ill for several days prior to the incident. The accused knew the victim's regular eating schedule. The accused had helped prepare the victim's food the previous night. The accused's relative had argued with the victim 2 years earlier. D. Sir, D. Option D. Why? तो दीटा जिनस मन रखियार अछि कि एटा सेक्शन 5 कोन कवर करछि, डायरेक्ट, immediate and proximate, okay, which may be the cause or the effect. Direct number 1, second है immediate, number 3 है proximate, पाखापाखि. ई वर्ष है remote है जाउछि सेटा, proximate नुह, temporally proximate नुह, temporally माने time related. दी वर्ष है. Okay, so D would be the answer. The accused relative had argued with the victim 2 years earlier. Okay. So eta hela section 5 ऊपर. Now come to section 6. 5 questions on section 6. हला. So question number 6 टा देखंतु जोटा कि section 6 ऊपर ही अछि. आमे देखिलु जोटा जोटा मु कहली आपन टिके अंडरलाइन करिकि ताको लिखिया पई कंडक्ट. सेक्शन 6 रे कंडक्ट रा मानेटा कोन सेटा से पचर.
Under section 6 of BSA 2023, which of the following correctly explains the scope of the term conduct? Conduct includes only physical actions done after the occurrence of event. Okay. Conduct includes any past conviction of the accused, whether related or not. Conduct includes acts influenced by or influencing a relevant fact or fact in issue. Conduct refers only to conduct of victim of the offense. कौनटा हबो केबे केबे कौन ना सिंपल जिनसटाकू से ऑप्शन एमिति देथिबो कि हमकु टिके भाबिबा पई पड़िबो राइट द कौन ए ऑप्शंस माने जदि सेमती लागुची जदि कंफ्यूजन लागुची ताहले प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कोउटा निश्चित भाबरे हबनी डीटा देखंतु डीटा उल्टे देछि हमें कोन पढथिलु कंडक्ट रेफर्स ओनली टू द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज ऑफ द ऑफेंस आउ कार कंडक्ट नो बुझि परले तो द डीटा उल्टे देछि A. डीटा रोइला A, sir. Dehela C. conduct includes only physical actions done after the occurrence of the event. କାହିଁକି ଆଗରୁ ଯଦି ହବ ସେଟା conduct ରେ ଯିବନି okay Option ଦେଖିଲା only word ଟା use କଲା and actions done after the occurrence of the incident okay ତ ସେଟା ବି କାଟି ଦବା ଠିକ ଅଛି only ଯୋଉଟା ଦେଖିଲା only physical actions why it can't be mental it can't be manipulative it can't be planned emotional ହେଇପାରିବନି ଖାଲି physically ହବ okay so a vitru C would be the correct answer correctly explains the scope of the term conduct conduct includes acts influenced by okay so influenced by the relevant fact or fact in issue or influencing the relevant fact or fact in issue ठीक अछि एटा कोन देखंतु सेक्शन 6 रो बेयर एक्ट को देखंतु टिके जस्ट गो टू द बेयर एक्ट सेक्शन 6 को जानतु ओके सेक्शन 6 को जानतु आउ तार सबसेक्शन 2 रे देखम क्लियरली सेति की दिया है सेटा ही दिया है लास्ट आडू देखम it is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto तो केवल subsequent नुह previous भी पारे बुझि परले why that answer will be C so C is the correct answer for section 6 for question 6 question 7 को आसंदो under explanation 2 of section 6 a statement made to a person is relevant when जदि दरकार पढ़ी दियन थरे explanation 2 टा okay A it is made in court under oath B it influences that person's conduct which is relevant under section 6 C it is made to any third party who later testifies in court and D it reflects the motive of a person whom it was not addressed to whom it was Sir, not B. addressed नहीं होगा D. D it influences that person's conduct which is relevant under section 6 बुझी पारले okay directly सेटा explanation 2 रे भी देछि आपनकर now let us go to some problem based questions based on section 6 okay जोडा कि हमर जो illustration देखिलो okay सही illustrations related तो question number 7 को आसंदो sorry eta question number 8 hover rather okay in a trial where A is accused of murder which of the following facts is most relevant under section 6 most relevant option A was seen fleeing the scene and later concealed the weapon option B A's friend gave a statement in court that A was a good person
Option C, A posted angry messages about unrelated persons on social media. Okay. The unrelated person माने से जो जरा murder ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ନୁହଁ ଆଉ କା ବିଷୟରେ ଲେଖି ଆଉ D, A had past disputes with someone else in the same locality but not with the victim. Okay. A sir. Sorry. So A will option be the A. option A will be the answer. हाँ कौन? Any doubts? तो এটা দেখନ୍ତୁ illustration E ଆଉ illustration I. Okay, illustration E ଆଉ illustration I ଟା ଦେଖନ୍ତୁ. Okay, ସେଉଥିରୁ inspired ହେଇକି question ଟା ସେ almost same ଜିନିଷଟା ସେ ପଚାରୁଛି. Okay, now 9th question କୁ ଚଲନ୍ତୁ. এটা ବି problem based question. In a case where B claims to have been robbed, which of the following facts is not relevant under section 6? Okay, so claim କରୁଛି B कि माने मोटू चोरी है मोटू जिनसो के नहीं जाइछ. Okay, चोरी है. कोटा relevant happen. B filed a police complaint describing the incident just after it occurred. B told a neighbor that he had been robbed without filing any complaint. जोटा मु कहतिली लेखिबे जोटा लास्ट दिटा illustration रे देछि से लास्ट दिटा illustration जो देछि along with the Option B. कोन सेटा जो section से देछि corroboration रो line declaration रो theory question रे सेटा लेखिबा पे पड़िबो. जेतेबेले पर्सनल नोट बनाउचंती सेही पार्ट टा निश्चिंत पर्सनल नोट रे लिखिबे. ओके, तो बी हला not relevant. Okay, quota not relevant. B cried and shouted, I have been robbed, and reported it to a police station. Okay, out D hela, B identified the accused in front of the police immediately after the incident. So odd man out करके भी अपन बाहर कर दे पारिबे. Option B. B. So B. Option B काहे ना जदि formal complaint हेनी ताहले A section under रे, that is section 6 रे relevancy आसीबन. तो सेटा any crime ही थो. Okay. तो से दीटा गोटे रेप केस रो देछि गोटे रॉबरी रो देछि. ओके, आउ लास्ट क्वेश्चन को आसंतु. क्वेश्चन 10. दिस इज आल्सो ए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन 6. A is accused of murder of C. Which of the following facts is relevant under section 6 as showing preparation? केवल preparation कथा कहूची. Okay, A visited C's home with a gift 2 weeks earlier. A brought a knife resembling the one found at the crime scene a day before the murder. C had written a poem about violence 6 months earlier, and A did not attend C's funeral. So, very direct B. question. So B. So B. Which of the following facts is relevant under section 6 as showing preparation? So, A bought a knife resembling the one found in crime scene a day before the murder. Okay, बुझिपारले. Now you take down a question. Okay, or rather I will just put it on the screen. टिके बड़ा अच्छी question टा. लिखिया पे बहुत time लगेगा. Okay, so I'll just put it there so that you can write it. First हला case टा. तो एथरे कोन ना theory आउ आपनकर practical माने theory आउ आपनकर problem दीटा जाक रहबो. मु एटा एथरे भी दे दोची ग्रुप रे so that आपनकर सेटा मिस होबोनी. ओके, तो ताको देखि के आंसर लिखि के मते पठेबे. एटा हला द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टा.
Okay, just have a reading. I'm also putting it in the group. Okay, so that eka sangare seta. Okay, this is the question. A is accused of murdering B. The prosecution alleges that A had a long-standing land dispute with B, and recently B had obtained a court order evicting A from the portion of land. 3 days before B was found dead, A was seen visiting a local chemist and purchasing a poison. After asking questions about how it could be used without leaving a strong smell or taste. On the night of B's death, A was seen having dinner at B's house. The next morning, B was found dead with symptoms of poisoning. An empty glass smelling faintly of almonds was found at the scene. ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା bitter almonds ଏଇଟା କାହାର smell? Okay, cyanide ର, right? ଆଉ actually କଣ ନା cyanide ସେମିତି normally ଯେତେବେଳେ autopsy ହବ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛି ଲୋକଟା, unless specifically ଆପଣ toxicologist କୁ କହିବେ ଯେ autopsy କରୁଛି ସିଏ ଜାଣିପାରିବନି. Very small percentage of population can smell cyanide. Okay, ସେଟା ବି dangerous, ତାକୁ smell କଲେ ବି ପୁଣି ନିଜକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ. ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ. So that is ମୁଁ କହୁଥିଲି medical detectives ତାର ଗୋଟେ episode ଅଛି bitter almonds. Okay, ତ faint smell of almonds means mostly cyanide ki kona ହେଇଥିବ ସେଟା. Okay, 2 days after the incident, C, a mutual friend, told A in a casual conversation, I heard police suspect you because you had dinner with B last night. A responded by suddenly leaving town and switching off his phone for 5 days. Police later discovered that A had burnt his t-shirt and gloves the morning after B's death. During investigation, the defense pointed out that A had a history of helping B during medical emergencies and even had once donated blood to B. They also produced a local villager's testimony that he had heard B mention that he was feeling ill for days, okay, before the dinner. ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଟା ହେଲା situation. Now, what is the question? Analyze the admissibility and relevance of the above facts under section C of the BSA 2023. Specifically discuss charita question achi. What facts can be treated as motive or preparation? What facts relate to conduct influenced by the incident? Whether A's action after incident can be used as evidence of guilt? How the defense evidence could affect the interpretation of A's conduct? Okay. So, a charity question ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିକି ତାକୁ you can write and send to me, or at least okay ମୁଁ ରାତିରେ answer ଟା group ରେ ଦେଇଦେବି. ଠିକ ଅଛି? So before that you can write and send. Got it? So tomorrow then we will go to 7. Okay, section 7, 8 and 9. ঠিক ଅଛି? 7, 8, 9 ତ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୁହଁ, ଏଟା 3 sections ଆମେ cover କରିଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ନା section 7 ରେ ବି okay 6ଟା ଖଣ୍ଡେ illustration ଦେଇଛି. Okay, ତାପରେ section 8 is important, ତା ଉପରେ questions ବି ପଡିଛି exam ରେ. Okay, our section 9 is also important. All these things we will see. Okay. Any doubts what you have studied today, generally speaking? Prelims ra, okay, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, prelims ଯୋଉ ଆମର exam ଟା ବହୁତ ଜଣ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ mental block ରଖି ଦିଅନ୍ତି କି ମତେ 60ଟା attempt କରିବାର ଅଛି, attempt ହେଇଗଲା ମାନେ it's almost done. ସେମିତି କରିବେନି, କାହିଁକି ନା
किए केतेटा क्वेश्चन भूल पकेबे कौन करिवे भगवान ही जानते और प्रो रेटिंग हेले बहुत प्रोब्लेम हम एथरक 10टा क्वेश्चन भूल पकेछन ओके तो जो मैंने बॉर्डर लाइन रे थिबे तांको बहुत प्रोब्लेम तो जिते आसूची सब गुड़ा करिए मत 95 टा आसु 95 टा करिवे कहीं छेड़ दे 95 टा आसूची ना तो 95 रो केतेटा भूल हे जो 5टा भूल हो 10टा भूल हो ओके आखि बंद करके मार्क करिया पे कोन जोटा जानि कि सेडा मार्क करछि बट अटेम्प्ट्स बहुत लो होबा कथा नो 45 ठीक ना आपन को लागो 45 ठीक जे 10टा पुनी भूल कर दबो सेडा नॉट वैल्यूड कर दबो सरला कथा सेमती करिवेन ओके मैक्सिमम जते हे परिवो 100 टू 60 हो 70 हो ओके भलो रे प्रिपेयर करिक जाइछन 70 टा कर दबारे कोन टा असुविधा बुझि पले तो सेटा माइंड रे रखिबे कीप दैट इन माइंड कि बहुत ही लो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करिवेनी सेटा आगु को जाई एई सब जिंस रे प्रॉब्लम हो ठीक अछि यदि 100 टा क्वेश्चंस ठीक होता ताले अलग कथा कि तो केबे कोन केतेटा क्वेश्चन भूल पकोचंदी भगवान ही जानछन एपीपी कथा मु कहतली एपीपी रे 130 रु 23 क्वेश्चंस भूल पकेछन इधर क्वेश्चन भूल नले ऑप्शन भूल नले एम्बिगियस क्वेश्चन व्हाटएवर okay so high number of attempts is required and you attempt those questions which you know or at least partially you know if you know more than 50% attempt चारिटा ऑप्शन अछि मु माइनस कर देले एटा हबनी सेटा हबनी ए दीटा भीतर कोटा हबो मु जाननी बट आई विल अटेम्प्ट 50% प्रोबेबिलिटी हे गला 25% हैला सेटा हला गोटे कथा हम बेसी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो पढ़ेनी तेणु डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़े तेणु सेमिति भी 40 50 आपनकर रहि जिवो ओके किंतु 50 रख देला पर बसी पड़िबे এই ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆସୁଛି ଆଉ 50 ଟାରୁ ବି ମତେ 30 ଟା ଆସୁଛି ତାହେଲେ କରିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଏଟା ମୁଁ ସବୁଥର ବି କୁହେ ଯୋଉ ୱିକଲି ଟେଷ୍ଟ କି ଆପଣ ମଡି ୱେଲ୍ଡିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆପ ରେ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗିଭିନ୍ ଦ ଆପ ତ ଆପଣ ରାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ଜଣା ପଡିଗଲା ସେଇଟା ନିଜେ ଓଏମଆର ରେ ଦେବେ ତାପରେ ଓଏମଆର ରେ ପରୀକ୍ଷା ତ ଓଏମଆର ରେ ଦେବାର ଅଛି ଓଏମଆର ରେ ମାର୍କ କରିବାଟା ବେଶୀ ସମୟ ନବ ବୁଝିପାରିଲେ it will take more time to bubble the OMR ଆଉ ବବଲିଂ ବି ଠିକ ରେ କରିବାର ଅଛି ମଝିରେ କରିଦେଲେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ପଳେଇଲା ଟିକେ ପଳେଇଲେ ଚଳିବ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ୟୁ नो द टेक्नोलॉजी ऑफ OMR केमिति आपनको खाताटा करेक्शन हुए खाताटा एमिति करेक्शन हुए कि जो आपण ओके आगुरु कोन थिला पेंसिल रे करथले काहे कि पेंसिल रो जो निबडा ओके सेटा को मटेरियल रहिछि ग्राफाइट टा हला ओके इलेक्ट्रिसिटी रो कंडक्टर गुड कंडक्टर ठीक अछि तो से कौन होची ना गोटे इलेक्ट्रॉनिक पल्स टा पठाबो जोठी कंडक्ट कला सेटा आपनकर ऑप्शन ठीक अछि सेतरे बहुत प्रकार प्रॉब्लम बाहरला पिला कहले हम यू नो हेची सब एमती एग्जाम माने एग्जांपल आगुरु जेतोले पेंसिल रे मार्क करा होतला कि हमर ऑप्शन लिभे दैछन मु सबुडा मार्क करके आस्थिली मो ब्लैंक अछि तब कि रबर रे लिभे दैछ मु देला परे ओके तो तापरे कमिशन कहला दरकार नहीं पेन बॉल पॉइंट पेन रे मार्क करा ओके तो बॉल पॉइंट पेन रे सो दैट इज ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन तो सेथरे कोन होची ना लाइट टा पास करची जो जगह रे आपनकर जणा पड़ची आपन मार्किंग करचंती दैट इज योर आंसर ओके जदि मु टिके स्पेस छाड़ी देली मजिटा छाड़ी देली साइड रे ब्लैंक रही गला सेठी असुविधा टिके चढ़े की टिके बाहर को पड़े इट इज फाइन ओके सेते बहुत जण कोहंदी मु 60 टा ठीक करथिली मोर एते कम कहीं आसला कने आपण 60 टा ठीक करचंती किंतु जो बबलिंग करचंती ओएमआर रे सेटा रजिस्टर कलानी कंप्यूटर बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओके सो सपोज आपण जदि या कहबे कि सपोज एटा हला आपनकर दिस इज योर बबल ठीक अछि एटा आपण बबल तो जने एमती बबलिंग कले हला भूल हबो काहे ना लाइट पास कर जियो सेतर कि व्हाइट स्पेस रे ओके जने एमती बबलिंग कले सो एटा गोटे बबल एटा गोटे ऑप्शन हला so someone has covered like this ये तो हे गला एटा फुल हे गला एटा ठीक भी अछि ता सहित एपटे भी टिके पड़ेला फुल हो तो केमती करिवार अछि ना ए जो बाउंड्री टा थाए ना बबल रो आपनकर ऑप्शन रो आकु कहंती आउट लेयर ठीक अछि तो सेटा कवर हबा दरकार टिके बाहर को पड़ेले चलियो किंतु से पूरा ता भितरे
पूरा व्हाइट स्पेस कवर हबो किछि रहइबन पूरा व्हाइट स्पेस कवर हबो एगुडा टिके मु बेसी बाहर कर दोछि बट टिके बाहर गले किछि असुविधा नहीं आरो ऑप्शंस है टच न करछि ठीक अछि हैला किछि व्हाइट स्पेस मोर नहीं तो एटा श्योरली ठीक हबो बुझि परले तो दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क तेणु ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्पेशली क्लासरूम स्टूडेंट तो सेठी ओएमआर ऑफिस रे आपण मिल जिवो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपण घरे एटले प्रैक्टिस करिए बाय सम ओएमआर और गेट एनी ओएमआर तार 100टा खंडे जेरॉक्स कर देबे एंड प्रैक्टिस ऑन ओएमआर ठीक अछि ऐप रे दोचंदी टू नो द इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाउची आ तार डिटेल्ड सॉल्यूशन ए सब जिंस रहउची ठीक अछि बट एक्चुअल एग्जाम रे मते केते टाइम लागुची सेटा मते जदी सेतिकटा आंसर बबलिंग करिवि ओएमआर रे ताले हबो इट टेक्स मोर टाइम एज कंपेयर टू क्लिकिंग ए रेडियो बटन जोटा आपण करूचंती ये रे ऐप रे कि ऑनलाइन आपण जदी जो भी केते गुडे ओपन सोर्स पे आपण देखिरे सेडा आपण वेबसाइट करी भी अछि है जल्दी ही जो सेटा बट एग्जाम रे तो हबो ना सेमती एग्जाम रे यू हैव टू बबल सेतै प्रैक्टिस ता तारी ऊपर रहइबो ओके बुझि परले फाइन सो विल स्टॉप हियर देन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क एल्स वी विल एंड ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କାଲି हां ଆପଣ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ସର କିଟା ପଠେଇଥିଲେ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ସାମ ର आंसर की काली जोटा पठेइतिली हां ନାନି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପଠେଇ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର काली ଯୋଉଟା हां କି ହଁ 2023 रो हां ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଥିରେ ଦିଟା ଅପସନ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଦିଟା ଅପସନ करेक्ट ଥିଲା ସି ଆଉ ଡି करेक्ट सीओडी हां ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ଧରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ କରିଦେଇଛି ସେଗୁଡା କଣ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କିଂ ଦିଅନ୍ତି ନା ସେଟା ପୁରା काटी दियंती सी और डी दीटा को सी ऑप्शन और इधर सी और डी इज करेक्ट आपण सी की डी मार्क करथिले आपनकर करेक्ट हे गला जदि आपण ए की भी यू नो बी मार्क करचंदी ताले आपनको भूल हे गला सेटा ଆଉ ଯୋଉଟା ନଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଡ ଅଛି ସେଟା ମାନେ ଆପଣ ଲେଖି ତଳେ ଗୋଟେ ଏନବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଟା ପ୍ରୋ ଡାଟା ରେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ହବ प्रोरेटेड हां ହଁ ତ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରୋରେଟେଡ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଟା କେମିତି ହୁଏ ମାନେ ଆଗ୍ରିଗେଟ ମାର୍କ ର ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକିରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରନ୍ତି ନା ବିଲକୁଲ ମାର୍କ बस बस ଦିଅନ୍ତିନି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି दे डोंट चेंज द टोटल मार्क्स हैला एई केस रे कोन 100 टा क्वेश्चंस थिला 100 मार्क्स वन क्वेश्चन वन मार्क ସେମାନେ କଣ କଲେ 10ଟା क्वेश्चन भूल हे गला सो नाउ 90 क्वेश्चंस हैव बीन इवैल्यूएटेड ओके तो 90 मार्क कर देबा कथा ताले ठीक अछि ना ସେମାନେ 100 टा को चेंज करिवे सो नाउ द इक्वेशन हैज बिकम 90 क्वेश्चंस 100 मार्क्स सो ईच क्वेश्चन को पड़ी गला मार्क्स आपनकर 100 by 90 और 10 by 9 1 रू तो बढ़ी गला ना नेगेटिव टा भी बढ़ी गला जोटा 1 मार्क रो 0.25 माने 25% हेतांता एबे सेटा से जो 10 by 9 रो 25% हो व्हिच विल बी मोर देन 0.25 तेणु एठी असुविधा का हुए जो माने बेसी भूल करके आस्ते जेतले प्रो रेटा लागि जाए से माने को असुविधा हे जो जो माने बेसी भूल करी नांती माने बेसी ठीक करचंदी तांकर बढ़िया तांकर मार्क जेतिक रहया कथा बढ़ी जीवो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बहुत गुड़े परीक्षा रे प्रो डाटा सिस्टम धरती 10टा भूल माने काढ़ी दियो 10टा को 90 रु इवैल्यूएशन सब 90 ओके बट ଯେହେତୁ ଯଦି ओपीएससी ଜଣେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କରିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭୁଲ ଅଛି ସେଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ମାନେ ଆମର ମାର୍କ କାଟିକି ସେଟା 90 ରୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ମାନେ ତ କୋଉ ପିଲା ମାର୍କ ବି ରଖିଥିବ ଧରନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ତାକୁ ଆସୁନି 40 ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆମେ ପାସ୍ ହବୁ ଆମକୁ ଆସୁଛି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 50ଟା ରୁ 50ଟା ଆମେ ଠିକ କରିକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ଆମେ କରିନୁ ବଟ୍ ଏମାନେ ପୁରାଟା କରିଦେଲେ ତ ସେଥିରେ ମାଇନସ ମାର୍କିଂ 40 ରୁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ दैट इज द थिंग एबे मु जो रैंक 10 भितर दी तीन जण अछंती जो मान ताकर शेयर करथिले मु आई वाज रियली एस्टोनिश्ड तांको भितर जनकर 43 अछि ओके आउ जनकर तो 46 अछि एमती माने प्रीलिम्स रे मु बुझ पले ने काहे की तो माने बाहर कले हां 10टा क्वेश्चन प्रोरेटा कर देछन ओके तो ऑब्वियसली तो माने कोन मु कहबी ओपीएससी विषय कहि कि इट्स मु सबले कोए ना आपणकर हार्ड वर्क भी अछि आपणकर डिटरमिनेशन ये सब अछि बट लक प्लेस ए वेरी बिग रोल ओके आ को टाइप रो क्वेश्चन करछंती आपण आपण कोन एमती एते कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पके दोचंती कि आपणकर भूल हे जाउची फैक्चुअल क्वेश्चन पकोचंती फैक्चुअल क्वेश्चन रे भी आपण को भूल केमती हो कहा को दोचंती आपण क्वेश्चन टा करिया पे रूल हिसाब रे तो एसोसिएट प्रोफेसर ऊपर ठीक अछि भलो यूनिवर्सिटी रो असिस्टेंट प्रोफेसर जे पीएचडी करचंदी कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करचंदी
ସେମାନେ बढिया क्वेश्चंस करिवे आपणको भितर जो माने सब एनएल यूज की अलगा यू नो कॉलेजेस से सब पढी चंदी ओके तो यू हैव सीन आपणकर केमती परीक्षा हुए स्पेशली एनएल यूज रे आपणकर कोन आंसर की रे भूल बारे ताल ताको ही दियंतु करिया पे किछ असुविधा नै जदि आपण कर पारु देन गिव इट टू सम एजेंसी जेमति की जो जेते सब टेस्ट आपणकर होची ऑनलाइन टेस्ट टीसीएस करूची सेडा ठीक अछि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा नो अलगा सब गवर्नमेंट्स आईबीपीएस रो ये रो तो ताकर के भी सब बाला हुए ओके तो आइते जदि निजे आपणकर कैपेसिटी नाही तले दियंतु जण को जे की करिवो ठीक रे there are other issues as well okay एमानकर बहुत माने lot of things are there सेतरे बट एनीवे आमो हिसाब रे हमको तो पाइबार अछि सो 40-50 अटेम्प्ट भूली जानतु मैक्सिमम जते अटेम्प्ट्स करि परिबे जति कि आपण जानछन ओके आउ एमाने देखंतु एग्जाम सरी गलानी रिजल्ट बाहरी गलानी एबे एमाने बाहर करछन आंसर की कोन हो ताले यू सी अदर जुडिशियल सर्विस आज परीक्षा हला इधर आज राति रे कि काली आपणकर बाहर कर देबे से माने आंसर की राजस्थान रे ईच ईयर सेमती हुए जो वर्ष एग्जाम जो ना दिन ना एग्जाम बहुत हे जगह से माने करंती सेटा ये कोन एमाने आगुरु करथिले એટલે ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ 2009-10 ବେଳେ ଏହା ହଉଥିଲା ଆଉ ସେମ୍ ଡେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ବାହାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଯୋଉ ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଥିବ ଏମାନେ ତ 4-5 ଦିନ ନଉଛନ୍ତି ଏବେ ସେଇ ଦିନ ରାତିରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ ବହୁତ ହି ଭଲ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ମଝିରେ କଣ ସବୁ ହେଲା ଏବେ କୋଉ ମାନେ ବାଟରେ ଚାଲିଛି ଇଟ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଆରେ ଭାଇ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଯଦି ଆନ୍ସର କି ବାହାର କରିବେ ଯୋଉ ପିଲାଟାର ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ଥିବ ସେ से कौन करिवो तापर एते टाइम पर सो लिटिगेशन को केमती कम करे दबा ओके एबे कौन करचंदी एबे से माने कहउचंदी गिव अस द जो ऑब्जेक्शन आफ्टर 6-7 डेज ऑफ द एग्जाम सरला ऑब्जेक्शन दे दियो से माने गोटे प्रोविजनल आंसर लिस्ट आंसर की दे दोचंदी एटा हला प्रोविजनल आंसर की यू ऑब्जेक्ट नाउ ओके अब मजा कथा हला से ऑब्जेक्शन टा फ्री ऑफ कॉस्ट नो तापई पैसा नउचंदी each objection पाई एतिकटा दोनो 100टा क्वेश्चन माने इज इट ए फेयर थिंग आपण जण को ऑब्जेक्शन पाई पचाउचंदी तापर कहउचंदी each objection पाई एतिक पैसा देबो आपण एमती 10टा भूल करचंदी माने स्टूडेंट 10टा भूल पाई पकेइबो आ सी से हिसाब रे सेतिक पे करिवो ओके तो जणा पड़ची इंटेंशन हैला भाई किछि ऑब्जेक्शन दियोनी ओके एंड देन आपण ऑब्जेक्शन दे देला परे जो हिसाब रे से माने इवैल्यूएशन करूचंदी इमीडिएटली बाहर करनांदी एटा रिजल्ट परे बाहर करे जेमती एबे बाहर करे तो ये बहुत यू नो इट इज लाइक कोन ही कहि पारि आपण बहुत बड़े इनसो आम हाथ नहीं मे बी ए गवर्नमेंट अंडर रे किछि चेंज हो गवर्नमेंट भी बेसी किछि कर परियोनी जो माने एते डीपली एंथ्रेस्ड अछंती से सब इकोसिस्टम रे से माने कोनोसी टाइप रो रिफॉर्म्स की चेंजेस को बहुत ही से माने रेजिस्ट करछंती ठीक अछि सो सेटा हला गोटे कथा एटा तो ऑब्वियस जिंस निजे ही अपन आंसर की बाहर कले ना काली मु सेटा ये कला परे मोर जने बहुत चिन्ह अछंती हु इज रिलेटेड टू ओपीएससी सी मते व्हाट्सएप कले कि एटा एते डायरेक्टली कहटा ठीक न मु कहली मु कोन कहली डायरेक्टली आपण तो निजे बाहर कल ना मु तम तो चुप होई बसतुले तो किछि कुहा ही नहीं पिलांको खाता आसु इंग्लिश रो तापरे जहा कहया कथा हम कहबो ओके इंग्लिश रे इट हैज बीन ए फ्रॉड दिस ईयर सीधा मु फ्रॉड वर्ड यूज कर इंग्लिश रे फ्रॉड करछन पिलांको साथ से पर्सनल लॉज रे भी एथर को बहुत खराब मार्किंग देजंदी खराब माने मार्क्स पर्सनल लॉ रे खराब मार्क्स दिया आइछि मु गोटे पिलार देखिली 100 ऊपर थिला तो के ताको इंग्लिश रे 31 ना पर्सनल लॉज ता में इथि पई नो कहना सेतरे मार्किंग भलो रुहे ईच एंड एवरी ईयर सेटा माने गोटे तार पैटर्न अछि मार्किंग रो पर्सनल लॉज रे आपण जदी लंबा जति लंबा लेखिए पर्सनल लॉज सेति माने जति सेटा एक्चुअली हमर जे पढुतु हमें नॉर्मली को जे कि जते पेज लेखिए पर्सनल लॉज सेति मार्किंग दिया जाय किंतु एई थर को आपण 40-50 पेज भी लेखि के आछन माने एवरेज कर दिचंदी पूरा 40-42 माने जति भी सांग मोर देइते इच एंड एवरी वन का एवरेज अछि 40-42 ताठू ऊपर को कहा को सर मार्किंग देई ना दे वर्ष ठीक अछि सेटा भी टॉपर्स मानकर भी से 60-70 रेंज रे अछि ओके जणकर खाली मु देखिली तंकर 101 थिला पर्सनल लॉ रे से को वर्ष गोटे गोटे पेपर सेमती हुए ओके बट सेटा ठीक अछि ताको तो आपण खाता मगेबे तापरे हमें ताको देखिबा कोन हिची बट इंग्लिश ता माने सहज 5टा क्वेश्चन ना ताको मैनिपुलेट करिवे सहज आ ये एमिति मैनिपुलेट करछन एथर को माने इट इज लाइक अनबिलीवेबल डर ही लगुच इनफैक्ट कि कोन करछन माने ओके एनीवे ठीक अछि सेटा तो दैट माने गोटे भलो तो जिंस करछन एटलीस्ट खाता दउछंती
एथर डेरी करेंगे 3 मास दिखती एथर देखो केवे देवे से जानते कहीं इंग्लीश में बहुत भूल कर ओके किए कौन खाता देखुला गॉड नोस ओके कौन भाविकी मार्क काटछंती ओके टेक्निकल क्वेश्चन तो दीटा कि धर धरी 3टा चलतु प्रेसीटा टेक्निकल ट्रांसलेशन टेक्निकल रिट्रांसलेशन टेक्निकल रूल हिसाब रे न लिखले जीरो भी दे दे पारिबे ठीक भी अच्छे फाइन काटी दियंतु से 3टा दैट इज 25 into 3 75 आउ 75 मार्क तो रहला एसए 50 कॉम्प्रिहेंशन 25 सेथरे पिलाकर कोन जीरो फिरो देछन ना कोन 21 केमति रहबो जे कि 150 करके आछि 5 मार्क्स देछन आपण एसए रे 50 रु 10 मार्क्स देछन व्हाट इज दिस ओके आउ वर्स जिंस हैला कोर्ट्स विल नॉट गो इनटू द मेरिट कोर्ट या देखिबे नि अनलेस टेक्निकल एरर हेची क्लरिकल एरर हेची मार्क मिसिनी इवैल्यूएट हेनी किंतु इवैल्यूएट हे जाईची 50 मार्क रु 5 देछंती इंग्लिश एसए रे जो कोनोसी इंग्लिश प्रोफेसर को देखेले से कहउछनी 35 रु कम हबनी रजत मिश्र सर को संगे कोन हेतिला तांको एसए बीजेपी कॉलेज रो जेतले से तांकर जे थिले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश रो से ओटीवी रे ऑन कैमरा कहले कि एटा 117 थिला ठीक थिला 117 रु काटी इट वाज मेड लाइक 40 की 50 कोन करथिले ठीक अछि सो अब किए भी कला सिग्नेचर किछि नै ही टुक इट टू द हाईएस्ट लेवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट किछि हे परले बुझि परले सो लक रो बहुत बड़ फैक्टर अछि हैव वेरी स्ट्रांग फेथ ओके सेदिन मु शुणुथिली हमर हिंदू लॉ रे सर भी से कथा कहउथिले कि टिके पूजा पाठ ओके सेटा जे जा मानछन सेटा करंतु काहे कि ना एटी लक रो फैक्टर बहुत अछि ओके आउ लक टा ऑब्वियसली योर प्रीवियस जहाँ भी आपण करछंती कर्मा की जहाँ भी आपण भाबंतु तार फंक्शन टा सेटा एमति नो कि लक आर ये बहुत लकी तो केमिति लकी हे गला ठीक अछि तो सेमति कोन तो एनीवे सेटा तो आम आमे आम कंट्रोल बाहर जिंस बट ए सब जिंस होउची ओके ए सब जिंस होउची आ एगुडा माने लाइक अनबिलीवेबल ए वर्ष रो इंग्लिश रिजल्ट्स ओके तो एनीवे ठीक अछि ता ऊपर तो हम टाइम नष्ट करिया रे ये नै बट एमती नो कि आपण इंग्लिश खराब लिखिछन बुझो बहुत इंग्लिश का खराब हे गला तो चलो इंग्लिश रे कोडी कोन कोचिंग नै जोय किछि दरकार नै सेम पिला लास्ट ईयर जे 70 80 रखिछन इंग्लिश पेपर रे सेम पिला एत 30 रखिछन इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट एजुकेटेड गोटे वर्ष रे एते खसी गला इंग्लिश स्टैंडर्ड ठीक अछि सो दैट इज नॉट अबाउट योर राइटिंग आपण को स्टैंडर्ड हिसाब रे कुआ जाउनी से किए कोन खाता देउछन सेटा हमें को बुझी पाले तो यू पीपल आर राइटिंग वेल से इंग्लिश टा एमती किछि बड़ गोटे रॉकेट साइंस पेपर नुह टेक्निकल ठीक अछि किछिटा अछि सेटा आराम में आपण सेटा छाडी देले भी 75 रु तो 50 मार्क मोस्ट पिला रखि देबे ओके बट माने एमिति यदि एटीट्यूड देखेबे ताले थिंग्स विल बी डिफिकल्ट ओके काना सिविल सर्विस वाली इट इज नॉट ए क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश सिविल सर्विस से कौन हुए इंग्लिश से फेल हो गले बाकी खाता प्राय चेक हुए ठीक है तेणु पिला कम कर बाट कौन इंग्लिश से फेल कर दियो ओडिया कंपलसरी फेल कर दियो बस बाकी खाता देखा सब्जेक्टिव द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ओपीएससी इज सब्जेक्टिव खाता देखिया पई लोक नाहन wherever they want or they are able to they are changing the pattern of exam ओडिशा एजुकेशन सर्विस ग्रुप बी स्कूल ब्रांच जो हेडमास्टर्स अछंती गवर्नमेंट स्कूल रो आउ टीचर्स माने अछंती ओके ओडिशा एजुकेशन सर्विस रो सॉरी हेडमास्टर्स नॉट टीचर्स आउ जो माने हमरा जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से माने ही जॉइन करछन ओके तांको परीक्षा आगुरु टोटली थिला एटा ग्रुप बी परीक्षाटा टोटली थिला रिटर्न किए खाता देखिबो एजुकेशन खाता किए देखिबो लोक ही नहंती पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू कम एंड करेक्ट ओपीएससी रे जहाँ को जबरदस्ती गवर्नमेंट ऑर्डर करके पठाउची यूनिवर्सिटी करी सी एमती खाता चेकिंग करछन ता रीजंस भी अछि भाई आपण खाता पई पेमेंट जति करछंदी से जने जे यूजीसी रो असिस्टेंट प्रोफेसर के एसोसिएट प्रोफेसर सी जो स्केल रे पाउची तार सैलरी सी काई कि जाई खरा रे बसी की माने जाई की ट्रैवल करके ए सब धंदा करिवो ए इंटरेस्टेड होना ओके एनीवे से जा भी हो बहुत गुड़े एतरे रिफॉर्म्स दरकार मे भी आस्ते आस्ते हबो किछडा हेची किंतु बहुत किछि हबार अछि ओके मेरिटोरियस पिला ये होचंती ठीक अछि सफर करूचंती एथ पे को वर्ष को पेपर रे एमती ओडे चले दोचंती एथरा इंग्लिश से करछंती
है खाली रिजल्ट तार से डेरी करके देबे बट जहाँ भी देबे तो श्योर ओके सेतबेले आपण देखिबे पिला माने जेतबेले पब्लिक करिवे आपनकर पेपर सुडा ठीक अछि खाता एमितिया करेक्शन हेछि आ एसे रे पूरा श्योर रुहंतु 50 रु 2 3 5 6 एमती देथन ओके एनीवे फाइन सेडा एक्चुअली बेसी भाबी लेना देखंतु जो जिंस ओडा हम हातर नहीं ता यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग बट सेते ता पई ते टाइम वेस्ट करियर नहीं यू प्रिपेयर योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड बुझि परले के जानला कोन अलगा मु बहुत बड़ा एग्जांपल दिए मोर जन कजिन कर तो भाई ना बहुत प्रिपेयर कले बट तंकर ओजीएस लेन ओके एंड ड्यू टू दैट तंकर बहुत अलगा इश्यूज भी हला भाउज ऑलरेडी ओजीएस थे फर्स्ट अटेम्प्ट रे इन 36 years से ओएसजे स्टॉप करे ओके ओडिशा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस डायरेक्ट एडीजे ओके 36 रे माने बहुत समय रहिबे हाई कोर्ट रे बुझि परले तेनु पाठटा पढंतु यू एक्वायर नॉलेज सेटा ठीक रे नॉलेज एक्विजिशन टा करंतु नॉलेज केबे वेस्ट जीवन ओके आपण ओजेएस में प्रिपेयर करले हु नोस खाली आपण एडीजे पाई जिवे ओके किंबा गोटे बहुत सक्सेसफुल एडवोकेट है कि आगु को जाई कि आपणकर एडवोकेट जनरल कि इवन हमर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही परिबे यू नेवर नो ओके मेनी ऑफ योर ऑप्शंस अछि आपण पाखरे बहुत ठीक अछि जो माने एज भीतर अछंती यू कैन ट्राई फॉर आर्मी आल्सो जज एडवोकेट जनरल जेएजी जोटा एंट्री थाए ठीक अछि लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर बट तापई पाठड़ा पढथिबा दरकार पाठड़ा ठीक रे जानले जो बाटे आपण ओजेएस में प्रिपेयर करछन प्रिपेयर वेल तापर अलगा भी बहुत बाट अछि लॉ ग्रेजुएट रो केबे किछ असुविधा होन ठीक अछि एनीवे फाइन सो वी विल स्टॉप हियर देन ओके आज सीपीसी टा स्टार्ट हबो तो अभिजीत सर विल बी टेकिंग एट 4 PM ठीक अछि तो सेटा आपण जो माने नुआ एबे जॉइन करछन फर्स्ट क्लास रो ताकू ये करि पारे ओके फाइन सो आई विल स्टॉप हियर नमस्कार थैंक यू सर Thank you, sir. Namaskar, sir. Thank you, sir.